Hi everyone, hello, warm welcome to VRC with Gaurav. In this video, we are taking a look at not an RC passage, but some verbal ability practice questions. Not many, actually, just a few summary questions and a few parajumble questions. Okay, so chalo, without any delay, let's dive in. Actually, the reason for making this video is there were some verbal ability fanboys who reached out to me saying, or who commented on a few videos saying कि यार आप तो वर्बल एबिलिटी पे वीडियो ही नहीं बनाते, आरसी आरसी बहुत बोर हो गया, समथिंग लाइक दैट. सो देयर पेन, देयर क्रेविंग फॉर वर्बल एबिलिटी was so you know coming out so strongly. So then I thought that yeah, maybe it might be a good idea to at least finally give some bhav to Parajumble. Actually, summary based questions I have made properly videos. Cat 22, Cat 21, all slots have been done as of this moment. In separate playlist I have also made, you can check it out. So all passages and all summary questions covered in the respective slots of 22 and 21 have been done. Parajumble questions, yes, I understand that I have not made any video neither on parajumbles nor on odd one out, which used to come till 21. In 22, we had a little bit change of pattern, a little bit change of question category, as in odd one out were thrown out, giving way to some new category which I like to call as fill in the blank. ठीक है, चलो उसका एक separate discussion होगा. But one of the reasons why I generally don't give a lot of bhav, lot of weightage to parajumble question is this. देखो, very basic, very straightforward. When we are discussing parajumble, so as such, अगर honestly मैं आपको बोलूँ तो मुझे ये question category बहुत पसंद है. Very unique, amazing thing. Okay, it's like putting a puzzle together, that too verbal. ठीक है, so somebody like me who is very interested in the nitty gritties of language, trying to put together a puzzle based on verbal logic, so of course it is right up my alley and I like to do it a lot. But and now this is an extremely important part. Thing to keep in mind is that we are not doing this for fun. Okay, we are doing this with respect to scoring in the exam, and that is where the odds starts getting stacked against you horribly. Okay, and based on my crude observation over the past 3-4 years since I've been in this field, maybe just 1 in 100 guys will be found जिसका parajumbles consistently correct होता है. The reason for that being is कि in as you guys might know कि हमारे CAT exam में parajumble questions come as theta typed in the answer, as in no options are given there. And of course the fancy feature that comes inbuilt along with it कि आपका सही हो जाता है तो +3 है, गलत हुआ तो 0. And this is a massive attraction point for a lot of aspirants out. बट एक बात आप लोग जब भूल जाते हो बहुत ज्यादा when you are trying to crack parajumbles is the odds are really stacked against you. For a 4 sentence question, जो कि about 2018 2019 onwards 4 sentence ही आते हैं parajumble, उसके पहले तो 5 sentence आया करते थे. When I was a first time aspirant, yes, I used to have 5 sentence parajumble in the theta format. वो तो बहुत ही डेंजर हो गया सीन. बट when it comes to 4 sentence parajumble in theta format, so there are 24 sequences possible in the moment when you're checking out the question for the first time. And with no options there to guide you, the odds of arriving at just one primary correct answer are so poor. Okay? This boils down to what? Approximately a little over 4%. Okay? Which is really bad, to be honest. There is only so much that you can beat mathematics or statistics at. Okay? So कहीं ना कहीं always keep in mind that when you are trying to crack parajumble, it's a battle, it's an uphill battle. I'm not saying कि आपके अंदर capability नहीं है. There might be some of you guys out there जो consistently बहुत correct answers post करते हैं. Yes, very much possible. Every year I also get 1 or 2 students exceptionally good like that. But keep in mind, exceptionally good ये जो word है उसके अंदर exceptional ये word है, and that means something. It means something like 1 in 100 guys will be able to do good at it. Now whether you are that one out of that 100 or do you fall in the remaining 99% people, that is your call. Okay, and at this stage when I'm uploading this video, CAT exam is just about a month away, actually a little less than a month away. But आप लोगों को एक क्लैरिटी तो अभी तक आ गई होगी by giving and solving these questions in mocks and sectionals. Where do you stand with respect to this question category? Overall a really fun one, but mathematics point of view, exam point of view, scoring, getting marks, getting a decent ROI, return on your investment. That is, in the exam, you're putting an investment of your precious time. 40 minutes के कुछ precious few minutes आप इसमें डालते हो. What is the return? Okay, don't go just by this, 0 marks का लालच. It is a very massive trap. Keep in mind
द पीपल वर सेटिंग दिस एग्जाम दे आर सुपर स्मार्ट पीपल, ठीक है। तो उनको पता है कि अट्रैक्शन पॉइंट, ट्रैपिंग पॉइंट क्या रहेगा फॉर 20, 22, 24 ईयर ओल्ड जनता के लिए। ऑल राइट, नाउ कमिंग कमिंग बैक टू आवर डिस्कशन, एक और ट्रैप जिसमें बहुत बार लोग फंसते हैं, एंड दैट इज व्हाई आई आल्सो स्टीयर अ लिटिल बिट क्लियर अवे अवे फ्रॉम डिस्कसिंग पैराजम्बल्स अ लॉट इज, क्या होता है, लेट्स से वी हैव अ क्वेश्चन 1 2 3 4, ओके ऑल राइट, एंड लेट अस से द करेक्ट आंसर टू दिस पैराजम्बल इज समथिंग लाइक 4 2 3 1। चलो बहुत बढ़िया, खुशी की बात है। नाउ on any given day, any random aspirant you pick up who might be fairly decent enough at VRC, ये बेचारा बना बैठता है कौन सा सीक्वेंस, तो दैट गाय माई मेक इट 4 3 2, अच्छा ठीक है, एंड देन मे बी अनदर सेकंड गुड एस्पायरेंट माइट बी मेकिंग समथिंग लाइक 2 3 1 4। तो दोनों भी आप देख सकते हो सीक्वेंस, दे आर वेरी क्लोज, वेरी सिमिलर टू द बिल्ड ऑफ द ओरिजिनल एक्चुअल आंसर, ठीक है। तो बहुत से बार इंस्टेड ऑफ जस्ट एक्सेप्टिंग दैट हाँ यार गलत हो गया, चलो जाने दो कोई बात नहीं आगे बढ़ते, नो, व्हाट इवन डिसेंट एस्पायरेंट एंड अप डूइंग इज कहीं ना कहीं वो एक एक मेंटल ट्रैप में फंस जाते हैं यहाँ पे कि अरे ये सही होते होते रह गया, आई वुड हैव गॉटन इट करेक्ट, बस ये इतना सा चेंज हो गया, बाकी सब तो मेरा कितना ठीक चल रहा था, 4 and 1 C आई हैव आल्सो पुट इट। तो कहीं ना कहीं यू आर किडिंग योरसेल्फ इनटू बिलीविंग दैट नो, things might miraculously work for you in the exam if you diligently keep on doing this question category, if you allot good amount of time to it in the exam, but ये एक fallacy है in my opinion, ये एक problem है। And if I'm not wrong, one of the most senior faculties in a cat sphere in VRC specifically has said in one of his lectures कि वो खुद ये question category exam में attempt नहीं करते, ठीक है। सो डोंट इवन टेक माय वर्ड फॉर इट, यू माइट थिंक अबाउट मी एज समवन लाइक यार नहीं आपकी बात पसंद नहीं आ रही, आपकी बात पे भरोसा नहीं है, तो यू कैन फॉलो वेरी वेरी सीनियर, वेरी नेशनली रेप्यूटेड फैकल्टीज जो खुद ये बोलते हैं, ठीक है। आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, ही हैज एक्चुअली सेड इट ऑन रिकॉर्ड, ऑलराइट। एंड देन I'm coming to this second वाला सीक्वेंस 2 3 1 4 which is uncannily similar to this, look 2 3 1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ओनली डिफरेंस बिंग 4 स्टार्ट में चाहिए था, इस बंदे ने आखिरी में रख दिया। नाउ बहुत सी बार क्या होगा ना, बोथ ऑफ दीज सीक्वेंसेस माइट बी रियली रियली गुड। अब ये आपका उस दिन डी डे के दिन आउटलुक पे डिपेंड करता है वेदर यू सी 4 एज अ क्लोजिंग स्टेटमेंट और एज एन ओपनिंग स्टेटमेंट। द क्वेश्चन पेपर सेटर सॉ इट एज अ गुड इंट्रोडक्टरी वन, यू सॉ इट एज अ गुड क्लोजिंग वन, दैट्स इट। बाकी ओवरऑल अगर आप लॉजिक फ्रेमवर्क देखो तो दोनों का काफी कुछ तो मैच हो गया, बट as the exam goes, as the question category goes, this is as horribly wrong as a sequence, let us say 1 3 2 4, ये तो पूरा का पूरा 180 डिग्री उल्टा है। द सीक्वेंस इज लाइक 4 2 3 1 एंड लुक व्हाट इज दिस, 4 2 3 1 ऐसा उल्टा लिख दिया यहाँ पे। सो दिस ऑल्सो गेट 0 मार्क एंड दिस ऑल्सो गेट 0 मार्क्स, देखो क्या मिला, व्हाट इज योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मैन, कितना पुअर। तो दैट इज व्हाई प्रैक्टिस के स्टेज पे आई refrain from discussing parajumbles a lot because of the inherent subjectivity in this question category and the inability of the tutor or even the aspirant to carry forward the skill, to carry forward the learnings from one question to another, that is absolutely absent in this. In one of the questions, we'll be applying some funda. In another question, we are applying some completely different concept and logic to put the puzzle together. जैसे कि आप बचपन में सॉल्व करते थे ना पजल्स, जो पीसेस आते हैं where you create recreate an animal or a place or a scenery, if you must have played with Lego blocks also, तो वहाँ पे भी, तो every time you use a different template to put things together, right? तो ये प्रॉब्लम इस क्वेश्चन कैटेगरी में इनहेरेंट है एंड देयर इज रियली रियली नो वे अराउंड इट, ओके। तो दैट इज व्हाई इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दो, प्लीज, माय हम्बल सिंसियर रिक्वेस्ट टू यू एट दिस स्टेज ऑफ योर कैट। One last month is remaining, and out of all the questions that you get in VRC, you're spending a lot of time and energy into cracking. यार मेरे तो पैराजम्बल ही सही नहीं होते, मैं वही प्रैक्टिस करूंगा दिन रात, प्लीज डोंट डू दैट, ठीक है। तो चलो, दैट बीइंग सेड, लेट्स गो एंड ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चंस। As usual, as always, I have put in the timestamps in the description box. We will be having, if I'm not wrong, about 3 summary questions and 3 parajumble questions. In order to keep the length of the video to a reasonable time limit, I put together only 3 questions. I'll try to bring in more and more questions in the coming few days. ठीक है? तो you can simply go to the timestamps, solve the questions, jot down your answers, या फिर पैरेलल जैसे जैसे वीडियो प्ले हो रहा है तो आप भी पैरेलल में सॉल्व कर सकते हो। द चॉइस इज कंप्लीटली योर्स। लेट्स गो सॉल्व सम समरी फर्स्ट, ओके। तो ये रहे आपके ऑप्शंस। आई वुड recommend that you pause it here, solve it, and then play the video once again and check out what the explanation was. All right, coming to the question now.
बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या बोला है कि फिलोसॉफी और लॉजिक में एक कंसेप्ट है नोन एज लायर्स पैराडॉक्स। ओके, क्लासिकल है कंसेप्ट लायर पैराडॉक्स। व्हाट इज इट? कि आप एक, चलो बार बार लायर लाइंग बोलना ठीक नहीं होगा। लेट्स से देयर इज अ गाय नेम ब्रूस, एंड दिस गाय इज अ हैबिचुअल लायर। ये हर बार ही झूठ बोलते रहता है, ठीक है। तो व्हाट डज इट मीन टू बी अ लायर? आप जो भी बोल रहे हो झूठ है। मतलब कि whatever Bruce might be saying, you will have to turn it opposite. You will have to negate those statements in order to arrive at something true. Meaning that Bruce engages in what? Falsehoods. ये जो भी बोलेगा वो false रहेगा। Alright, ठीक। तो चलो, we have a situation where Bruce is saying, "Your world, I am a liar" या फिर "I am lying." ठीक है, ठीक है। तो अब हम जानते हैं भाई ब्रूस इज अ लायर, मतलब दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स। सो देन व्हाट इज ट्रू? ट्रू विल बी आई एम नॉट लाइंग, मतलब आई एम स्पीकिंग द ट्रूथ। ठीक है। तो देख रहे हो आप पैराडॉक्स क्या क्रिएट हो गया? कि यू आर सेइंग, नाउ यू आर इम्प्लाइंग दैट ब्रूस इज सेइंग दिस। भाई मैं तो सत्य बात कर रहा हूं। तो अगर ये सच बोल रहा है, इफ ब्रूस इज स्पीकिंग द ट्रूथ, देन व्हाई इज अ लायर? Because liar का definition क्या है? Somebody who always speaks in falsehoods. So if he is somebody who is saying the truth, who, if you accept that the statement as true, then bomb, the sentence start eating itself. कहीं ना कहीं एक logical fallacy तैयार हो गई। That if this guy is a liar, then how can he say that he is lying? समझ में आया आपको? ओके, तो कहीं ना कहीं इट्स अ विशियस सर्कल। कहीं ना कहीं इट्स लाइक अ डॉग चेजिंग इट्स ओन टेल, अ सर्पेंट ईटिंग इट्स ओन टेल। हैपेंस दैट। पैराडॉक्स का मीनिंग क्या होता है? पैराडॉक्स इज समथिंग लाइक लॉजिकल फैलेसी। कि आप प्योर लॉजिकल नजर से आप उस सेंटेंस को देखो, वो सेंटेंस कुछ बनता ही नहीं, कुछ बनता ही नहीं सेंस उसका। माई फेवरेट एग्जाम्पल ऑफ पैराडॉक्स इज, यू नो व्हाट, दैट वेरी फेमस सॉन्ग का मेन हेडलाइनिंग लाइन, बेख्याली फ्रॉम कबीर सिंह। ओके, बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए। Cost, if your state is bekhayali, meaning if your mind is in a state of no thoughts, not thinking, then what is that fucking thought doing over there? बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल है। Dude, either it is a state of बेख्याली या फिर somebody's ख्याल। There is no in between. So don't drive us crazy. So that is a classic example of paradox. Okay, logically possible ही नहीं है ना? तो same thing happening over here. I'll repeat once again कि Bruce is a liar, ठीक है। तो आप बोलते हो कि यार इसका ये statement I am lying should be false. Then what is true? That he is saying what is saying, and I am speaking the truth. So if he is speaking the truth, then how is he a liar, right? So I know what your reaction might be at this stage. Yes, 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 100% पॉसिबल होता है ऐसा, ठीक है। एंड दैट इज व्हाट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डिस्कशन हियर इज, कि ये क्या हो गया भाई? मतलब वन मोमेंट समथिंग इज फॉल्स एंड द नेक्स्ट मोमेंट इट बिकम्स ट्रू आल्सो। तो व्हाट इज गोइंग ऑन? हमें तो बचपन से सिखाया है दैट ट्रू एंड फॉल्स आर अपोजिट ऑफ ईच अदर। सो दिस इज वेयर द नैरेटिव बिल्ड्स। कि देखो ओवर द इयर्स a lot of philosophers have spent a lot of time talking about this paradox। कि उसमें हो क्या गया, उसे पता क्या चलता है, दैट there is no clear cut distinction between truth and falsehoods। ठीक है, ट्रूथ एंड फॉल्सिटी में देर आर अ लॉट ऑफ कॉमन बिलीव्स दैट वी होल्ड, जो क्रैश कोलैप्स हो सकते हैं। देर आर लॉट ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन इनहेरेंट। हमें बचपन से सिखाया जाता है दैट दिस इज अ सेट ऑफ ऑल ट्रू स्टेटमेंट्स इन द वर्ल्ड, दिस इज अ सेट ऑफ ऑल फॉल्स स्टेटमेंट्स इन द वर्ल्ड। दे आर कंप्लीटली एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर। बट examples like this liar paradox, they kahin na kahin, prove to you that boss life is not so simple. There can be some situations where boom, this is happening, set of true statements, set of false statement, and there are some statements in between like this classical liar paradox, जो आप समझ ही नहीं सकते सही है या गलत है, क्या चल रहा है। ओके, so coming back to the narrative, so what does it do, what does liar paradox show to us? ठीक है, तो टू थ्री बातें यहाँ पे हमें पैसेज में बोलिए। लेट्स हाईलाइट दैट कॉन्ट्राडिक्शंस अराइज व्हेन वी आर टॉकिंग। ओके, एंड द नोशन ऑफ ट्रुथ इज अ वेग वन। मतलब तुम जो एटीट्यूड घमंड लेके चलते हो ना, मैं जो भी बोलता हूँ हमेशा सत्य है, वॉट एवर आई स्पीक इज ट्रुथ। तो द डेफिनेशन ऑफ ट्रुथ इटसेल्फ इज कॉम्प्लेक्स, इट इज सॉर्ट ऑफ वेग, नॉट 100% ट्रांसपेरेंट। Okay, in some cases true statements might be like
The sun rises from the east. Okay, very, very straightforward. No confusion there. But what about statements like this? That a liar is saying, a liar is claiming that I am lying. What about this, boss? इसको क्या बोलोगे? इसको ट्रू बोलने जाओ तो भी मरोगे, फॉल्स बोलने जाओ तो भी मरोगे. कहीं ना कहीं फंसना ही है आपको खुद की बातों में. So what does this show to us is that in language there are inherent weaknesses of language. Liar paradox ये आपको दिखाता है. Okay, and what is the weakness of language here? Not nothing to do with grammar or vocabulary. Everything is fine. Grammatically correct है sentence, vocabulary में भी कोई problem नहीं है. Problem ये है that sentence में दम ही नहीं है. No truth value. Okay. आप ये भी नहीं बोल सकते कि ये स्टेटमेंट सेंटेंस सच है, ये भी नहीं बोल सकते ये स्टेटमेंट झूठ है. कहीं तो आप स्टेलमेट में फंस चुके हो व्हेन इट कम्स टू एग्जांपल्स लाइक क्लासिकल लायर पैराडॉक्स. ओके, तो वंस अगेन कहीं ना कहीं प्ले ऑफ वर्ड्स बहुत ज्यादा है यहाँ पे. राउंडिंग ऑफ द डिस्कशन वंस अगेन. पार्डन. क्लासिकल लायर पैराडॉक्स एक, जब झूठा इंसान, जब एक ब्रूस जैसा इंसान बोलता है आई एम लाइंग, दैट इज अ क्लासिकल लायर पैराडॉक्स. Because the sentence ends up beating itself up, the sentence ends up contradicting itself. Okay, and because of such example, what becomes clear that there are weaknesses in language, and the problem is not with grammar or semantics or vocabulary. The problem is कि language के अंदर कुछ sentences को truth value नहीं होता. आप कितना भी दिमाग लगा लो, कुछ नहीं हो सकता. ठीक है, तो चलो let's analyze the options one by one. I'll go from D to A. D क्या कहता है? Liar paradox arises because the notion of truth is a vague one. Wait a minute. Okay. ठीक है, चलो यहाँ तक okay है. That because the notion of truth is a vague one. Yes, got it. All right, correct. And because grammatically correct sentences may have no truth value. Okay. इसमें problem क्या है? Problem इसके अंदर ये आ गया कि it is not showing the story properly. First of all, liar paradox, who is saying what is liar paradox? It is not defining to us. Secondly, it is showing that only one aspect ki kahan se aata hai ye, because the notion of truth is a vague one. It is simply focusing on this one aspect over here. Boss, what about this contradiction between truth and falsity? ये part तो miss हो गया. If you are talking about one reason, you also have to mention equally good second reason also. Okay. Secondly, it should have mentioned कि the sentence the liar paradox is grammatically sound, but reason नहीं है यहाँ पे. इसने causal link क्या दे दी कि grammatically correct sentence में have no truth value, उसकी वजह से liar paradox होता है. Horribly wrong. This because has absolutely no place over here. This should be thrown out. What it simply should have written is, and grammatically correct sentences may have truth value. अगर इतना लिखा होता तो फिर ये ऑप्शन सही हो सकता था. But because it built an unnecessarily causal link over here, which the last sentence of the narrative does not give it to you, hence option D collapses badly. Okay. The question may feel like a little bit of head scratcher to you right now, because unfortunately even I cannot break it down into some easy to understand story या फिर easy to understand straightforward narrative. कहीं ना कहीं वर्ड प्ले बहुत ज्यादा है इसके. ठीक है, चलो. ऑप्शन सी, द लायर पैराडॉक्स, द डिक्लेरेशन दैट आई एम लाइंग. ओप्स, ये ऑप्शन यहीं पे कोलैप्स हो गया. क्यों? द डिक्लेरेशन दैट आई एम लाइंग, बट हु इज मेकिंग दैट डिक्लेरेशन? बॉस, it is extremely necessary that a liar is saying. अगर समझो मैं, गौरव, is a very truthful person, somebody who always speaks the truth. Okay, तो मैं अगर बोलता हूँ that I am lying, तो that is not a liar paradox. क्लियर कट हमें यहाँ पर पैसेज में देखो, पैराग्राफ में बोला है that it should be a statement of a liar that he or she is lying. If somebody who speaks truth always, या फिर somebody who sometimes speaks the truth, sometimes engages in lies, अगर ऐसा ambiguous type इंसान है, common man अगर बोल रहा है, तो ये चीज does not hold true. We have a very specific scenario only when a liar says this. तो यहाँ पे ऑप्शन सी में बोला ही नहीं है. The declaration that I am lying, coming from whom? Coming from a liar. वो clear cut वहाँ पे होना चाहिए, and that is the reason we throw it out. Same reason B also gets thrown out, because problem of generalization is happening.
कि द डिक्लेरेशन आई एम लाइंग इज अ लायर पैराडॉक्स। हेल नो। मतलब आपने बोल दिया, मैंने बोल दिया, कोई भी बोलेगा आई एम लाइंग तो ये स्टेटमेंट पैराडॉक्स है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अ लायर, पर्सन लाइक ब्रूस हु ऑलवेज लाइज, हर बार जो झूठ बोलता है, जब वो ये स्टेटमेंट बोलेगा तब ही लायर पैराडॉक्स क्रिएट होगा। ठीक है। तो दैट इज द सुपर सुपर फाइन डिफरेंस बिटवीन ऑप्शंस ए एंड बी। अदर देन दैट ए एंड बी आर एक्चुअली वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर। बी तो बहुत होलसम है, अदर देन दैट, यू नो, अदर देन दिस goof up this problem at the start। ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दैट आंसर ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन ए। यहाँ पे क्लियर कट बोल दिया है उसने दैट अ लायर्स स्टेटमेंट दैट ही और शी इज लाइंग, इसके वजह से लायर पैराडॉक्स क्रिएट होता है। गॉट इट? तो अमेजिंग, अमेजिंगली वेल फ्रेम्ड ऑप्शंस, आई लाइक देम अ लॉट। तो इस वजह से ऑप्शन ए बिकम्स द आंसर बिकॉज इट इज क्लोजिंग द लूप प्रॉपरली। ठीक है। तो चलो, आई होप दैट द नैरेटिव इज क्लियर टू यू एंड आपका एक्सप्रेशन आई नो माइट बी समथिंग लाइक दिस राइट नाउ। हो सकता है, एक्चुअली अ लॉट ऑफ पीपल, आई पुट दिस क्वेश्चन आल्सो इन वन ऑफ माय टेस्ट। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली बहुत सारे लोगों ने ऑप्शन बी मार्क कर दिया इसमें। दे मिस्ड द फाइन डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ओके, so this is where summary questions come in play। okay, so chalo, with that let's go to the next question। I hope that this narrative is clear to you। Still, if any doubts, let me know in the comment section। Here are your options। So once again, pause, solve it, and then check the explanation। Okay, to be very honest, right from the start I'll tell you, paragraph बहुत अच्छा है, even easy to understand। the options are the real devil। and ऑनेस्ट कन्फेशन, मेरा खुद का ये गलत हुआ था। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव कि ऐसा क्वेश्चन अपने एग्जाम में स्किप करना चाहिए बिकॉज द ऑप्शंस आर रिडिकुलसली क्लोज टू ईच अदर। क्यों? तो देखते हैं नैरेटिव क्या है। नैरेटिव, लेट्स चेक आउट व्हाट द ऑथर इज सेइंग ओवर हियर। द वेरी फेमस फिलोसोफर सेइंग, गोइंग बाय द नेम ऑफ डेस्कार्टस, ही इज सेइंग कि देखो यार, आई थिंक देयरफॉर आई एम। ओके, सुनने में थोड़ा वियर्ड लगता है, क्या मतलब इसका? तो डेस्कार्टस का क्या बोलता है, बॉस देखो, तुम सोच रहे हो इस मोमेंट में, ओके ठीक है, तो अगर तुम्हारे दिमाग में कोई थॉट है, इफ देर आर सम थॉट्स इन योर ब्रेन, तो कुछ सोर्स तो है ही ना उसका। थॉट सीधे हवा में से थोड़ी आ सकते हैं। तो डेफिनेटली देर इज अ सोर्स बिहाइंड द सीन्स डूइंग दैट थिंकिंग। इन द केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इट्स कॉल्ड द ब्रेन। एंड वॉइला, इफ यू हैव अ ब्रेन, बॉस तुम भी हो। मतलब तुम्हारा दिमाग है तो तुम भी हो, तुम भी एग्जिस्ट करते हो। एंड हेंस इफ यू थिंक, यू एग्जिस्ट। ओ माय गॉड, बाप रे, कितना पाथ ब्रेकिंग रॉकेट साइंस वाला स्टेटमेंट। ठीक है। आई एम वेरी श्योर डेस्कार्टेस ने जब ये बोला होगा ना स्टेटमेंट, इट मस्ट बी लाइक, वो मीम बनाते हैं ना, अमिताभ बच्चन शाउटिंग इन केबीसी, 7 करोड़ आपके हुए। तो समथिंग समथिंग लाइक लाइक दैट हैपनिंग। ओके, आई विश आई शुड हैव इंसर्टेड दैट मीम ओवर हियर यार, गलती हो गई। ठीक है। तो प्लॉटिंग इट डाउन, व्हाट डज डेस्कार्टेस से? डेस्कार्टेस का क्या बोलता है? इफ यू थिंक, यू एग्जिस्ट। इसमें कोई डाउट नहीं है, ये 100% सत्य बात है। मतलब कि लेट्स डिफाइन दिस एज इवेंट पी एंड दिस इज इवेंट क्यू। सो इवेंट पी होता है तो क्यू होना ही होना है। क्यू विल हैपन डेफिनेटली इफ पी इज हैपनिंग। दिस इज व्हाट मिस्टर डेस्कार्टेस हैज टू से। एंड द रीजनिंग दैट ही हैज गिवन टू अस व्हेन मेकिंग दिस लॉजिक, व्हेन मेकिंग दिस स्टेटमेंट इज कि देखो यार, सोचना और लॉजिक लगाना, दे आर द एसेंस ऑफ ह्यूमैनिटी एंड दे आर योर प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस। ठीक है। तो प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस मतलब अगर आप सोच रहे हो तो आप डेफिनेटली एग्जिस्ट करते हो। तो यस, आई कैन से दैट इफ यू आर एग्जिस्टिंग देन यस यू मस्ट बी थिंकिंग। करेक्ट, 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 राइट। तो प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस क्या है? दैट यू आर थिंकिंग। गॉट इट, ऑल राइट। चलो आगे चलते हैं। तो इतना सा ही नैरेटिव है। ऑप्शंस आर वेयर, पागल कर दिया जहाँ पे ऑप्शंस ने। act of thinking is proof of individual existence according to Descartes। चलो, with that in mind, let's go take a look at the options। ऑप्शन ए को देखेंगे पहले। Descartes का स्टेटमेंट, आई थिंक therefore I am, so far so good, means one can exist only as long as you are thinking and reasoning, without which existence is uncertain। oh, लॉजिकल प्रॉब्लम कमिंग इन हियर। इसने क्या बोल दिया ए ने? अट्रैक्टिव लगता है ऑप्शन, बट व्हाट इज इट सेइंग? that Q can happen only and only if P happens।
इसका मीनिंग क्या निकलता है पता है? ऑप्शन ए का, दैट इफ एंड ओनली इफ पी देन क्यू। इसका मतलब आप देखते हो कि यार क्यू इज हैपनिंग, तो पी 100% हुआ है। ऑप्शन ए इज इम्प्लाइंग कि पी क्यू ये एक 100% जोड़ा है, कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। बट इज दैट व्हाट द पैराग्राफ इज टेलिंग अस? नो। पैराग्राफ देखो क्या बोलता है, भैया पी है तो क्यू हो जाएगा, बहुत खुशी की बात है, गारंटी दे देते हैं। एंड यू हैव एन इंक्विजिटिव माइंड, लेट्स से यू से दिस टू योर चाइल्ड, एंड योर चाइल्ड इज लाइक क्यू है, ओके, इवेंट क्यू इज हैपनिंग, इवेंट पी हुआ क्या? कोई गारंटी नहीं, ठीक है। वाइस वर्सा पॉसिबल नहीं होता, गारंटी नहीं दे सकते आप। व्हाट यू कैन एंश्योर इज वन वे गारंटी लाइक दिस हैपनिंग। पी हो गया, अरे बॉस तुरंत क्यू भी होने ही वाला है, बहुत बहुत कॉन्फिडेंस के साथ हम बोल सकते हैं, ठीक है, ऑल राइट। इवेंट क्यू हुआ है, हैज इवेंट बी हैपेंड? मे बी, मे नॉट बी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो कीप दिस थिंग इन माइंड, ये लॉजिकल फैलेसी में नहीं गिरना है जो ऑप्शन ए गिर गया। व्हाट ऑप्शन ए इज सेइंग कि क्यू हैपेंड, फिर तो पी पक्का हुआ ही हुआ होगा बॉस, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं। मीनिंग पैराग्राफ इज सेइंग व्हाट शुड हैव बीन लॉजिकली करेक्ट ओवर हियर इज समथिंग लाइक दिस, कि P implies Q, P के वजह से Q होता है, बहुत खुशी की बात। Q हो गया है, has P happened? Maybe yes, maybe no. Cannot say anything with guarantee right now. That is what the paragraph is giving us information. We only know this. ठीक है? So that is why option A gets kicked out, because it is saying exist only as long as one is. Okay? चलो, option B. Descartes का statement, I think therefore I am, चलो so far so good, means that proof of humanity lies in its ability to think and reason, which is the essence of all existence। यार इतना प्यारा ऑप्शन कितनी छोटे से रीजन की वजह से एलिमिनेट होता है, क्यों? बिकॉज दे हैव एक्सचेंज दिस टू टर्म्स, प्रूफ एंड एसेंस, दिस शुड बी इंटरचेंज विद ईच अदर। व्हाई? लेट्स सी व्हाट द पैराग्राफ टेल अस। Thought and reason are the essence of humanity. Okay, thought and reason should be the essence of humanity. The essence of humanity lies in thought and reason, and ability of thinking is proof of existence. तो यहाँ पे essence की जगह चाहिए था proof of existence, और यहाँ पे चाहिए था essence of humanity, तो फिर ये ऑप्शन सही हो जाता। बट अनफॉर्चुनेटली वी डू नॉट हैव दैट, एंड हेंस इट गेट्स किक्ड आउट। आंसर ऑप्शन बनता है ऑप्शन सी, थर्ड। डिस्कार्टिस का स्टेटमेंट, आई थिंक देयरफॉर आई एम, मींस कि देखो यार बाकी चीजों का एग्जिस्टेंस ना, एग्जिस्टेंस ऑफ एवरीथिंग एल्स माइट बी अनसर्टन, गारंटी नहीं ले सकते। मैं केवल एक चीज की गारंटी लूंगा, कि मैं सोच रहा हूँ ना, तो भैया मैं पक्का एग्जिस्ट करता हूँ, मतलब इवेंट भी हैपेंड ना, तो आई कैन गिव यू गारंटी कि इवेंट यू विल हैपन। मीनिंग दैट यू कैनॉट डाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द थिंकर। व्हाट इज अ थिंकर? पर्सन हु इज थिंकिंग, मतलब somebody who engages in event, my bad, somebody who engages in event P. What can you say? That event Q will 100% happen. Yes, and that is why you cannot doubt the existence of the. Once again, a lot of wordplay, a lot of वही बात जो घूम रही है गोल 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 गोल. Yes, that is happening, but there is literally no way out of this. So once again, my verdict actually stays the same. This question should be skipped when it comes in exam, or questions like this. Do not let your ego come in the way. A lot of times, 90% of the cases, you will be able to, differentiate the options very well from each other. नहीं, यहाँ पे ये एक वर्ड गलत हो गया, वहाँ टोन गलत हो गया, डिटर्मिनिस्टिक टोन यूज कर दिया when they should have used a word like maybe, might be. So in all those cases, 90% of the time, basic logic helps you select the right option, eliminate the wrong ones. But in questions like this, where it is such a close call, this is like, one guy getting 100 percentile and you getting 99.9 percentile, ठीक है? So you're so close yet so far. Practically तुम दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, but you can never call yourself as a 100 percentile. Only your friend can call himself that. The same thing goes for, let's say option A or B compared to C. They are so ridiculously close. ठीक है? चलो, still if any doubts, drop it in the comment section. We'll go to the next question now.
दिस आर द ऑप्शंस. वेरी 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 गुड क्वेश्चन. देखो क्या बोलता है यहाँ पे. इन द इमीडिएट आफ्टरमैथ ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी, यू शुड नो दीज इवेंट्स. अभी तो मूवी बनी भी थी उसके ऊपर में, ओपेनहाइमर, where they where USA developed atom bombs and dropped them on two cities of Japan in 1945, 6th August and 9th August to be precise. ठीक है. तो क्या हुआ? Look, instead of telling you reading each and every line, the paragraph is giving you very simple narrative कि when World War II end, इस तरीके से आप पैराफ्रेजिंग या फिर मेंटल लॉजिक बना सकते हो which will help you crack the options. So what happened when World War II ended? Atom bomb is equal to world dominance, key to world dominance. ठीक है. कुछ समय गया, रशियंस ने खुद का बॉम्ब डेवलप कर दिया. अरे यार टेंशन की बात हो गई है, चलो. तो फिर आइडिया रिवाइज. रशियंस मेक बॉम्ब. यार क्या कर दिया मैंने? होली शिट. Okay. Pardon. I keep on making goof ups like this. Let me jot it down once again for you. वर्ल्ड वॉर टू एंडेड. तो एटम बॉम्ब को कैसे देखा जा रहा है? एटम बॉम्ब इज की टू वर्ल्ड डोमिनेशन. ओके. ऑल. देन रशियंस मेड देयर बॉम्ब. तो फिर ये आइडिया को रिवाइज किया गया. लोग अब बोल रहे हैं अरे नहीं नहीं, एटम बॉम्ब अब एक तरीका है दुनिया को ही बर्बाद कर देने का, ह्यूमैनिटी को ही खत्म कर देना है. ओके. वे टू एंड सिविलाइजेशन. ओके. इवन ह्यूमैनिटी. एंड ह्यूमैनिटी. ठीक है जी. ओके. बट देन सम टाइम पास बाय, देन नथिंग हैपेंड थैंकफुली. तो पीपल आर लाइक यार थोड़ा सा चिल लग रहा है सिचुएशन. सो नाउ वंस अगेन द आइडिया इज रिवाइव्ड. कोल्ड वॉर इज स्टिल ड्रैगिंग ऑन. कोल्ड वॉर बाय द वे यू शुड नो व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस टर्म इज. ऐसे स्टैंडर्ड टर्म्स हिस्ट्री के आपको पता होने चाहिए. अगर नहीं पता है तो तकलीफ जा सकती है एग्जाम में, बिकॉज नो बडी इज एवर गोइंग टू गिव यू एन एक्सप्लेनेशन ऑफ सच स्टैंडर्ड टर्म्स. Atom bomb is equal to deterrence or prevent war. Way to prevent war. All right. तो रिवीजन कितने बार हुआ है? दिस इज रिवीजन नंबर 1 एंड दिस इज रिवीजन नंबर 2 एंड दिस इज ओरिजिनल आइडिया. ठीक है. दिस इज व्हाट द पैराग्राफ इज टेलिंग अस. एंड ऑफ स्टोरी. नथिंग मोर देन दैट. एज सिंपल एज दिस. ठीक है. तो अभी ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं वन बाय वन. कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा गलत है. ठीक है. आइडिया ऑफ द ऑप्शन ए आई एम रीडिंग. Idea of the atom bomb as a key to world dominance was revised once at the official end of World War II, then once again revised as Soviet Union did something, and then once again revised. अरे बाप रे कितने रिवीजन हो गए? ऑप्शन ए के हिसाब से 3 बार रिवीजन हो चुका है. बट नो, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन बीइंग गिवन टू अस? हाउ मेनी टाइम रिवीजन हैपेंड? 2 ही बार. ऑप्शन ए ने गलती कर दी. इट इज मेंशनिंग रिवाइज वंस, देन ट्वाइस एंड देन थ्राइस. रॉन्ग. बहुत गलत वर्डिंग. आउट. बी. एटम बॉम्ब which looked like the key to world supremacy after the World War II. बहुत बढ़िया. So far so good. यहाँ तक के yes, atom bomb was looking like the key to world supremacy. Yes, original idea. Got it. Okay. Then that idea was changed to being a threat to humanity itself during the Cold War. बहुत बढ़िया. That is revision number 1 going on. Correct. And then later it was seen as a deterrence to all war. बहुत बढ़िया. Way to prevent all war. Option B is amazing. Strong tendency to select is at the answer. So I am very strongly holding it as my answer candidate. Let's go take a look at what the other options are saying. C. After Hiroshima and Nagasaki. Fair enough. Okay. All right. Idea of atom bomb as the key to world supremacy. It was revised. अरे बहुत बढ़िया. मतलब ये ओरिजिनल आइडिया था. Then this idea was revised to what? To being a threat to humanity. Yes, revision number 1. End of humanity. Correct. And then once again it was revised. Good. To what? To being a deterrent to all war.
इन विच, अरे वाह, इसने तो बहुत बढ़िया हमें एडिशनल ज्ञान दिया है, दैट द रीजन फॉर डिटरेंस इज बिकॉज देयर वाज अ बिलीफ कि वॉर अगर शुरू हो गया तो देयर विल बी एनिहिलेशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ बोथ द साइड्स कंप्लीटली। तो यार ये तो बड़ी दुविधा हो गई। ऑप्शन बी एंड सी दोनों बहुत ही औसम है। करे तो क्या करे, सिलेक्ट करे तो किसे करे, एलिमिनेट करे तो किसे करे। तो आंसर बिकम्स आंसर ऑप्शन सी। बी इज एक्सट्रीमली क्लोज, extremely close, rather the statement is 100% true, there is absolutely no problem. The only problem is कि उससे superior third option तैयार हो गया। You take away the third option and in my opinion the answer should very well shift to the second option properly. The only difference between option B and C is that the third option gives us this important gyan at the end. कि why was it seen as a deterrent? Because potential annihilation are possible. That there were people who believed that both sides would get annihilated. तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है? Yes, this is where option C, the third one, wins the game. All right. And D में तो बहुत ही horrible flaw है. What does it say? That Hiroshima and Nagasaki change the perception about atom bomb. Hell no. हिरोशिमा नागासाकी पे बॉम्ब डालने के बाद में दिस ओरिजिनल आइडिया वाज फॉर्म्ड कि एटम बॉम्ब से आप दुनिया में डोमिनेट कर सकते हो। चेंज कब हुआ परसेप्शन में? व्हेन रशियंस मेड देयर बॉम्ब, नॉट हिरोशिमा नागासाकी इंसिडेंट। आउट। बी इज हॉरिबली रॉन्ग। बी could have won the game but poor fellow loses out in front of C. ऑप्शन बी को आप ना वैसा बोल सकते हो, दंगल का डायलॉग है ना, दिल छोटा मत कर, नेशनल लेवल चैंपियन से हारा है तू। तो समथिंग लाइक दैट। यस, ऑप्शन सी सुपीरियर होने की वजह से मिसेस द चांस, मिसेस द बोट फॉर अ वेरी 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 स्मॉल रीजन। ओके, so I hope that these three questions were clear to you. Let me know your score in the comment section, whether you got all three questions correct or two or just one. Any comments are highly appreciated. ठीक है, तो चलो अब जाते हैं पैराजम्बल क्वेश्चन। All right, so you can pause this here, try to solve it, jot down your sequence. Instead of walking you through each and every nitty gritty of the parajumble और कैसे करना चाहिए, I'll jump थोड़ा सा 2-3 steps in the explanation. You can see here that in sentence one it says it is the mother of all conspiracy. So you need some kind of headline before sentence one comes in, because the pronoun it has to stand for something, right? So that is not given anywhere, only and only in sentence four, which says that simulation hypothesis is the ultimate conspiracy theory. And ultimate conspiracy theory, best, paramount, सबसे ऊपर, and this is also saying the mother of all conspiracy. थोड़ा सा slang language है actually. Mother of this, mother of that, ये बहुत recent terminology है. This is not very formal English, but yes, makes the job very easy for us. That 4 and 1 are very, very, very good pair with each other. Okay, let me write it in a different place actually. Sentence 4 and 1 they are a mandatory pair, proper pair है। फिर बचता क्या है? 2 and 3। तो 2 का जो कॉन्टेक्स्ट है, अभी आपको यहाँ पर सेंटेंस 2 जो इंफॉर्मेशन देता है, यू हैव टू टेक दैट इनटू अकाउंट व्हेन ट्राइंग टू पुट इट whether after 1 or before 4. What does it sentence 2 tell us? And this perfect deceit, deceit मतलब धोखा। Okay, तो धोखा, what धोखा are we talking about? In sentence 4 and 1, what is the information coming away? There is some concept known as simulation hypothesis. I have absolutely no idea what this means. I don't care. Moving ahead, कि ये जो theory है, ये जो concept है simulation hypothesis, what does it tell us? That everything around us is fake. सब कुछ एक सेटअप है, कुछ भी नेचुरल नहीं है, हम सब बेवकूफ बनाए जा रहे हैं। वाओ, ओके। तो ये जो हमारे साथ धोखा हुआ है, ये जो परफेक्ट धोखा हुआ है, परफेक्ट डिसीट, ये पता चलने के बाद भी क्या कर लोगे? इट्स लाइक सेंटेंस टू इज टेलिंग यू, क्या उखाड़ लोगे? ठीक है, इट ऑफर्स अस नो वे आउट। इवन इफ आई कम एंड टेल यू दिस बॉस, एवरीथिंग अराउंड दिस इज कंट्रोल्ड, व्हाटएवर वी आर फीलिंग, व्हाटएवर इज सीइंग डे इन डे आउट, एवरीथिंग इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय some elite higher power. And you will be like, अच्छा okay bro, but मैं अब क्या कर सकता हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। yes, correct. All you can do is come to terms with the reality of it. हाँ, हो गया, हमारी जिंदगी कंट्रोल्ड है ऐसे, एंड मेक ऑफ इट व्हाट यू कैन। चलने दो जिंदगी। तो ऑप्शन, सॉरी, सेंटेंस टू डेफिनेटली हैज टू कम आफ्टर 4 एंड, ओके, पहले तो नहीं आ सकता। आई कैन नॉट हैव अ सिचुएशन जहाँ पे 2 पहले आ गया और 4 1 बाद में। दैट इज क्लियर कट। नाउ द एंटायर डिस्कशन रिमेन दैट वेदर सेंटेंस 2 विल कम इमीडिएटली आफ्टर 4 1 या फिर समथिंग लाइक दिस।
तो दोनों भी सेंटेंसेस को सीक्वेंसेस को एनालाइज कर लो आप, एंड यू कैन सी विच वन इज बेटर, 4123 या फिर 4132, या फिर फॉर द सुपर एडवेंचरस यू कैन इवन गो फॉर 3412। ऑल राइट, बट एक बात तो फिक्स है कि 4 और 1 एक बहुत स्ट्रॉन्ग पेयर है। सो टेक इन टू अकाउंट व्हाट सेंटेंस 3 इज टेलिंग यू। सेंटेंस 3 क्या बोलता है कि देखो यार, हमारे जो डीपेस्ट फियर्स है अबाउट पावरफुल फोर्सेस एट प्ले कंट्रोलिंग आवर लाइव्स अननोन टू अस, ये फैंसी वर्ड यूज किया इसने। एक तरफ ही यूजिंग मदर ऑफ ऑल कंस्पिरेसी, सच स्लैंग लैंग्वेज, एंड देन यूजिंग सच ओल्ड इंग्लिश वर्ड लाइक दिस, अनबिनाउंस्ड टू अस। वाओ मिस्टर ब्रिटिश। इसका मीनिंग सिंपल यही है कि हमारे जो डीपेस्ट फियर्स है दैट सम हायर पावर इज कंट्रोलिंग अस, ये अब सच हो गया। ओ, ओके, ओके। तो व्हाट इज अ गुड सीक्वेंस हियर? ओके, तो सीक्वेंस करेक्ट यही है कि व्हेन आई टेल यू सेंटेंस 4 and 1 में इंफॉर्मेशन कि बॉस तुम्हारी लाइफ इज बीइंग कंट्रोल्ड एंड गए तुम काम से, सब कुछ तुमको बेवकूफ बनाया जा रहा है, एंड सेंटेंस 3 देन कम्स एंड टेल्स यू कि यस तुम्हारे डर तो हो गए ना अभी कंफर्म, चलो चिल करो अभी, और क्या कर सकते हो, योर फियर्स हैव नाउ कम ट्रू एंड यू आर हेल्पलेस। सेंटेंस 2 इज सेइंग जो उखाड़ना है उखाड़ लो, कुछ नहीं कर सकते। तो व्हाट कुड बी द अप्रोप्रिएट सीक्वेंस हियर? इट इज समथिंग लाइक 4132। ठीक है, रीजनेबली वेल, रीजनेबली यू कैन डू इट। बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव नहीं है क्वेश्चन, 4-1 इज अ वेरी डुएबल पेयर। अब रही बात आपने 2-3 कर दिया या 4-1-3-2 कर दिया, ये तो अब देखो थोड़ा सा इन दैट मोमेंट रश की वजह से, कुछ वजह से हो सकता है। सो सच सच माइनर स्लिप अप्स आर कंप्लीटली नेचुरल एंड इसका कोई इलाज नहीं है। वेरी वेरी अनपॉपुलर ओपिनियन, आई नो दैट। हार्डली एनी ट्यूटर आई हैव कम अक्रॉस सेइंग कि पैराजम्बल्स में एक लिमिट ही है जहां तक तुम कुछ कर सकते हो, उसके आगे कोई तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। rather I've seen quite a few tutors, actually in my home state actually this idea seems to be very popular, where tutors actually push aspirants to do as many parajumbles, as many practice, as much practice as possible, but I am of a completely opposite opinion। एक लिमिट के आगे आप कुछ नहीं कर सकते। तो have that mindset of surrendering, have that mindset of going with the flow। सही हो भी सकता है, गलत भी हो सकता है, एलिमेंट ऑफ लक इज हेविली प्रेजेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यू कैन पॉज इट हियर, जॉट डाउन योर आंसर एंड देन कम बैक। तो ये बहुत बहुत ही प्यारा, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है। इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट यू कैन वेरी इजीली फाइंड एंड डिटरमाइन इन सेंटेंस 3। व्हाट डज इट से कि देखो सी ग्रास है सी के अंदर में, एंड वेस्ट कोस्ट कोई तो जगह है वहां पे बहुत हंड्रेड्स ऑफ माइल्स तक है। चलो अच्छी बात है, गुड। व्हाट डज इट डू? तो यू हैव बेनिफिट इन सेंटेंस 1। ओके, लेट्स से बेनिफिट नंबर 1, एंड सेंटेंस 2 and 4 में बेनिफिट नंबर 2 दिया है। नंबर टू गिवन ओवर हियर। तो व्हेन यू रीड सेंटेंस 2 and 4, तो बहुत अच्छे से आप एक पेयरिंग बना सकते हो दैट यस 2 and 4 आर अ वेरी गुड गुड पेयर। हाउ कम? बिकॉज सेंटेंस 2 इज सेइंग कि बॉस देखो दे मे ऑल्सो मिटिगेट। मिटिगेट का मीनिंग होता है कम करना, कोई निगेटिव बात का इम्पैक्ट आप कम कर रहे हो। रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग अ सीरियस कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन। क्या? कि ओशंस आर गेटिंग एसिडिफाइड, इज नॉट कूल, नॉट गुड। तो सी ग्रास इज हेल्पिंग डायल इट डाउन, एसिडिटी कम कर रहे हैं ओशन वाटर। How are they doing it? Sentence 4, because they perform photosynthesis. Good, good. So 2 is introducing what they do. 4 is giving you extra detail, the modus operandi of doing that. Chalo, anyway, so 2 and 4 give you benefit number 2, and then you have sentence what? Sentence 1 is giving you benefit number 1. Now, how do you decide which benefits come first and next, second? So very good hint word, connector word present before us in this way over here. Also this कि हाँ हाँ जी, हाँ जी, एक और एडवांटेज है, एक और एडवांटेज है, मतलब उसके पहले एक एडवांटेज आप बता दो। सो वेरी इजी, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, द सीक्वेंस बिकम्स 3-1-2-4। आपने बेनिफिट नंबर 1 पहले बता दिया, फिर एक्स्ट्रा बेनिफिट भी है भाई ऑल्सो, और आपने वो एक्सप्लेन कर, स्ट्रेट फॉरवर्ड एज दैट। सो आंसर आंसर फॉर यू, आई पुट इट वंस अगेन ऑन द स्क्रीन। ये रहा सीक्वेंस, करेक्ट। ठीक है, 3-1-2-4। आई आई होप दैट आपका ये सही आ गया हो, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। और एग्जाम में 3 में से एक पैराजम्बल का क्वेश्चन कुछ इस टाइप का आ जाता है, वेर देर इज हार्डली एनी रूम फॉर एम्बिग्यूटी,
and almost any decent aspirant can get that sequence correct. बस दिमाग थोड़ा सा ठिकाने पे चाहिए. You should not be in a mad rush. All right. Whoa. Okay. Pause it, solve, and now see what does it mean. क्या बोलता है ये क्वेश्चन? सेफ्टी वेयर इज सेल्डम कूल. आप अलग अलग डिवाइसेस देख लो, अलग अलग जो एक्सेसरीज होते हैं, और इससे ना इंसान कूल नहीं दिखता यार, कुछ तो रैंडम दिखता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट ये एक्सेसरीज, ये चीजें लाइक आर्म बैंड, बाइसिकल हेलमेट, हाई विजिबिलिटी जैकेट्स, ओके, यहाँ पे इसे क्लियर कट लिखा नहीं है, दिस इज हाई विजिबिलिटी, मीनिंग दैट दे आर एक्सट्रीमली ब्राइट एंड उसके ऊपर थोड़ा सा रेडियम वगैरह भी पेंटेड होता है, तो एट नाइट व्हेन यू थ्रो लाइट ऑन दोज जैकेट्स एंड ऑल, तो इमीडिएटली एकदम उठ के दिखेगा. यू कैन सी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेयरिंग दिस एंड ऑल. तो ऑथर कहता है कि बिकॉज ऑफ दिस सेफ्टी वेयर, बिकॉज ऑफ दिस रैंडम शिट विजिबिलिटी, रैंडम शिट थोड़ा सा लुक्स के वजह से, दे नेवर स्केल्ड द हाइट्स ऑफ फैशन. मतलब दे दिस थिंग्स डिड नॉट बिकम फैशनेबल. डू यू सी एनीबडी इजीली गोइंग अराउंड विथ अ बाइसिकल हेलमेट ऑन देयर हेड? तो नॉट रियली, थोड़ा सा ओवरकिल लगता है वो. बट देर इज अ वंडरफुल एक्सेप्शन, शेड्स हैव बक्ड द ट्रेंड. तो यहाँ पे हल्का सा आपका वोकैबुलरी कम्स इनटू प्ले. शेड मतलब परछाई नहीं, शेड मतलब छाव नहीं. जो हिंदी वर्ड है ना छाव, पेड़ की छाव के नीचे खड़े, दैट डज नॉट मीन शेड्स. शेड्स का मीनिंग है यहाँ पर सनग्लासेस. ओके. अ बिट कोलोक्वियल यूजेज फॉर सनग्लासेस, या फिर हमारी देसी भाषा में हम गॉगल जिसको बोलते हैं, ठीक है. तो sunglasses have bucked the trend. This is the hint word for you. So what does this make it very clear that 1 and 4 are a very good pair. ठीक है. कि सेंटेंस वन में यू आर सेइंग यार देखो अलाना फलाना ऐसी चीजें जो सेफ्टी वाली है, ये कभी फैशनेबल बनी नहीं यार, लेकिन सनग्लासेस बन गए. सनग्लासेस हैव डिच्ड द ट्रेंड. व्हाई? बिकॉज ये दूसरी चीजों की तरह आपके लुक को हैम्पर नहीं करते. Okay, they do not distort your natural shape, they do not make you look crazily bright like that high visibility jackets and all. तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो गया 1 and 4 का. अब आती है तकलीफ कि हाउ डू यू हैंडल सेंटेंस 2 and 3. ठीक है. तो सेंटेंस 2 में आपको बोला गया है कि यार सनग्लासेस जिनका मेन एम है आपकी आंखों को प्रोटेक्ट करना, ये एक फैशनेबल एक्सेसरी भी है. ओके. दे केम इन द मार्केट अ सेंचुरी अगो एंड नाउ दे आर समथिंग, सेफ्टी वेयर भी है और साथ ही साथ एक फैशनेबल स्टेटमेंट भी है. तो फॉर मी व्हाट आई वेंट एंड डिड इज कि आई डिड दिस 1 4 2 3, where I'm saying, where I'm talking about some trend, then in 4 that trend getting exception to that trend being sunglasses. and how exactly, तो 2 और 3 में मैंने sunglasses की तारीफ कर दी, उसका एक्स्ट्रा ज्ञान आपको दे दिया. but life is rarely ever this simple. As it turns out, this sequence is out. Okay. Wrong. What is the correct sequence? Correct sequence is this. That instead of 1 4 2 3, what we have is 2 1 4. So I was partially right when I made this pair of 1 4, but unfortunately my placement of sentence 2 horribly wrong, and I would get 0 marks for this. Okay. So yes, होता है. And I've been very honest with my students always with respect to Parajumbles. Element of luck, you absolutely can never deny it. Even the best of people will fail when it comes to Parajumbles. Everything is contingent on what the context of discussion is. ठीक है. तो इस क्वेश्चन कैटेगरी को लेकर फिक्सेट मत करो, इस क्वेश्चन कैटेगरी को लेकर एरोगेंट मत बनो. एग्जाम में डेफिनेटली अटेम्प्ट करो, बट बहुत सोच समझ के, इन द सेंस डोंट इन्वेस्ट लाइक 5 6 7 minutes इनटू 3 पैराजम्बल्स. डोंट बी स्टूपिड दैट. ठीक है. रीजनेबल टाइम डालो, गेट इन क्विक, गेट आउट फास्ट, दैट्स इट. ओके. वो बोलते हैं ना हिंदी में भागते हुए जा दौड़ते हुए आ, समथिंग लाइक दैट. Get into it and come back from it very very quickly. Now the timeline when to attempt parajumble questions in the exam, it varies from aspirant to aspirant. I will refrain from giving one size fits all advice over here. I'll leave that to your other typical cliche VRC YouTube tutor जो बनाते हैं ना आपके वैसे वो typical thumbnail, 40 percentile to 90 percentile in 2 months. दो भैया आप ही लाओ aspirant को 2 महीने में यहाँ से वापस. All right. Chalo, I hope that you had a decent practice in this roughly 6 questions. Going ahead, I'll put more videos for VA. Tab tak ke, thanks a lot and keep on preparing, keep on studying really well. I'm going to start a booster course batch from November 1 to November 10. The details have been already posted in the video just prior to this one.
You can check it out. Very short 5-6 minute video, and let me know if you would like to enroll for it. Reach out to me on this mail ID, and I'll see you in the next one. Tata, bye bye, take care.